हेलो पिला माने जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करुँची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। सो आज आम डिस्कशन करबा आपण मानकर अपकमिंग थर्ड सेमिस्टर रो आर्ट्स स्ट्रीम पिला मानकर गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट पेपर पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस रो इंपोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन गुड़िक। सो आज आम जी भी क्वेश्चन डिस्कशन करूँ आपन को बहुत ही हेल्पफुल हम आपणकर एग्जाम रे। सो स्किप न करके वीडियोटी को लास्ट जाए देखिए। जदि वीडियोटी भल लगे देन वीडियोटी को गोटे लाइक करदे। सो आमर आज क्लास फर्स्ट क्वेश्चन हूँ एक्सप्लेन द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन टीचिंग सोशल साइंस। सो आम सोशल साइंस पढ़ेला बेले जो सब आम मटेरियल यूज करूँ जो सब टीचिंग एड यूज करूँ तार आवश्यकता कौन आ तार सिग्निफिकेंस कौन से विषय आम पढ़ा। सो आम मेनली आम सोशल साइंस पढ़ेला बेले बहुत सारा जमी पिक्चर माने पिक्चर देखिए पिला मानू पढ़ू कि ऑडियो टैब देखिए बुझाऊ तो से सब टीचिंग एड रो आवश्यकता कौन से गुड़ाक ही आम पढ़ा। So teaching aids a device which present unit of knowledge through auditory or visual stimuli or both with a view to help learning। तो आमे जो सब visual stimuli हो कि किसी auditory device use करू पढ़िया पे सेटा को कहते teaching aids। Burton has defined teaching aids as those sensory object or image which initiate or stimulate and reinforce learning। से सब सेंसरी ऑब्जेक्ट जहाँ भी आमर नॉलेज टाको आउरी एक्सटेंड करे आमको पढ़ाया को आउरी हेल्प करे तो से गुड़ा को कहती कौन टीचिंग एड्स। देन आम जानिबा नीड ऑफ टीचिंग एड्स इन द टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज कौन आवश्यकता अच्छी तार। So social studies in an area of school curriculum that deals with the time both past and present places not only of immediate vicinity but of different parts of the world। तो social science होची एमिति गोटे विषय जहाँ कि जो थे कौन इन्वॉल्व थाए बहुत हिस्ट्री भी इन्वॉल्व थाए और जियोग्राफी भी इन्वॉल्व थाए। तो ओवरऑल कहया को गले कौन ना एटा मोर पास्ट लाइफ सहित भी डील्स करे पास्ट रे कौन होइतिला हम भारत रे आ प्रेजेंट सहित भी डील करे आउ कौन प्लेसेस केवल जे भारत विषय सेटा नुह भारत बाहर कौन कौन पार्ट्स अच्छी सेटा भी माने कहया गले ओवरऑल वर्ल्ड को कवर करे। These aids can reinforce the teaching of social studies in ways more than one। तो हमको बहुत सारा उपाय मिल जाए जहाँ फल कि आम कौन करूँ आम नॉलेज टाको एक्सटेंड करि पारू। देन आसला इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड। टीचिंग एड रो कौन इम्पोर्टेंस अच्छी अकॉर्डिंग टू गुड्स डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन ए टीचिंग एड इज एनीथिंग बाय मीन्स ऑफ व्हिच द लर्निंग प्रोसेस मे बी एनकरेज और कैरिड आउट ऑन थ्रू द सेंस ऑफ हियरिंग और सेंस ऑफ साइट। जदि आम किसी जिनस शुणिकी पढ़ी किसी मटेरियल यूज कर गोटे जिनस को बेटरली नॉलेज गेन कर देन सेटा को कह आमर टीचिंग एड। According to psychologists, maximum utilization of sense organ could be possible। Sense are said to be gateway of knowledge जोटा कि आमर कलवन देइथिले। इट इंडिकेट्स दैट द स्टूडेंट लर्न। तो एटा हमको एया कहे कि पिला माने ए सब थ्रोरे इजीली पढ़ी पारिबे। सो पाखापाखि 83% थ्रो साइट माने पढ़ती 11.1 थ्रो हियरिंग 3.5% लोक थ्रो स्मेल 1.5% लोक थ्रो टच आउ 1% लोक थ्रो टेस्ट। Teaching aid are sensory object facilitate, initiate and stimulate reinforce learning। The learning structure can be effectively generated with the help of teaching aids and the teacher can achieve the instructional objective very easily। Then asila amoro next question, what are the different type of maps, write their uses। आमे कौन कौन मैप यूज करूँ कौन कौन टाइप आम मैप अच्छे से सब विषय पढ़ा आ तार यूजेस कौन से विषय पढ़ा। मैप इज ए विजुअल एड। मैप माने मानचित्र। इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ऑन फ्लैट सरफेस। Maps are merely diagrams that usually represent certain physical area of the surface of the earth। दे रिक्वायर इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो मैप देखिकी आम कौन भी जगह को आम गोटे आइडेंटिफाई कर कौन जगार माने कौन तार भूमि रूप केमी जलवायु केमी से सब आम आइडेंटिफाई कर। देन आसला टाइप्स ऑफ मैप्स। केते प्रकार आमर मैप्स अच्छी
प्रथम आसला जियोग्राफिकल मैप्स आर कंटर मैप्स, वेदर मैप्स एंड सेलोमोजिकल मैप्स, रेनफॉल मैप्स, जियोलॉजिकल मैप्स। तो जियोग्राफिकल मैप रे आमे बेसिकली कह गले गोटे जगार वेदर कंडीशन है कि तार केते डिग्री अच्छी केते वर्षा सेठी होउची तार भूमिरूप केमिति ए सब विषय जानि था। नसला हिस्ट्रिकल मैप जोटा कि आमे गोटे जगार कोन बा गोटे कंट्री रो हिस्ट्री विषय जानि पारो। इट शोज द कंट्री एट सम अर्लियर पीरियड, एग्जांपल किंगडम ऑफ अशोक। हिस्ट्रिकल मैप्स रे आमे कोन जानि पारो ना गोटे राजा शासन समय से जगार केमिति अवस्था कौन थिला से सब विषय आम जापर। देन आसला पॉलिटिकल मैप्स शो पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ ए प्लेस सच एज मैप ऑफ इंडिया एंड मैप ऑफ एपी। देन आसला फिजिकल मैप्स शो सो फिजिकल मैप्स शो फीचर ऑफ आर्ट सच एज रिवर माउंटेन इट गोटे जगार फिजिकल फीचर केमिति से विषय आम जानी था। देन आसला यूजेस ऑफ मैप्स मैप्स रो कौन कौन यूजेस अच्छी to express economic relationship, political relation, to show the shape, size and distance of an area, in teaching current event, to illustrate the effect of event and locate the places। तो बेसिकली आम मैप्स यूज करूँ गोटे जगह को लोकेट करने गोटे जगह को आइडेंटिफाई करने तार केमिति कौन स्ट्रक्चर अच्छी ता साइज केते केते डिस्टेंस एटा तो ओवरऑल ये सब जानापी मैप्स को यूज करूँ। देन आसला आमर नेक्स्ट क्वेश्चन एगुड़ा सबू ही सर्ट नोट आकार ही आपण मानकर आसो मन रखु 5 मार्क आकार ही आसो। एक्सप्लेन अबाउट मैप लैंग्वेज एंड मैप रीडिंग एंड मैप मेकिंग। तो मैप लैंग्वेज कौन मैप रीडिंग कौन मैप मेकिंग कौन से विषय आम पढ़ा। सो फास्ट आम जाना मैप लैंग्वेज कौन मैप लैंग्वेज कौन आपण मैंने रिमाइंड करूँ आम जिते बड़े मैप्स देखू से सब राइट साइड रे कलर गुड़ाक यूज होता है जमीक आमर ग्रीन कलर है आम जाना से समतल भूमि है आमर जो आमर कौ कलर येलो कलर हेले मरुभूमि नीला कलर हेले से जलभाग। तो ये जो सब लैंग्वेज देखिए आम जापर तो एरियाटा कौन सेटा को ही कहते मैप लैंग्वेज। Different features of earth surface are shown in map by various symbols, color and pattern जोटा कि मैं कहली तो सेटा कहते मैप लैंग्वेज। द commonly used symbol in the map are points, solid leaves, letters, colors, setting, drawing and symbolic characters। Quantitative data is represented by dots, circles and square। तो आमर जो क्वांटिटेटिव डाटा जी से गुड़ाक डॉट्स मध्यम सर्कल मध्यम आउ स्क्वायर्स मध्यम शो कर। यूजुअली लाइन्स आर यूज्ड टू शो रोड्स, रिवर एंड कोस्टल लाइन्स। तो जी आम रोड है से सब क्या मध्यम शो कर लाइन्स मध्यम। कलर्स आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश वन आर फ्रॉम द अदर। देन प्रोडक्ट्स एनिमल लाइफ कैन बी रिप्रेजेंट बाय ड्राइंग। तो केते अछंती माने मनीष अछंती कि पशु पक्षी रहउछंती कि केते गच्छ अछंती से सब ड्राइंग्स माध्यम रे शो करा जाय थाए। देन आसला मैप रीडिंग केमिति करा जाय ना मैप रीडिंग रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डायरेक्शन, स्केल, सिंबल एंड कांसेप्ट ऑफ द अर्थ। Direction on a map. Usually maps are prepared in such manner that north direction is at the top of the map and the south side is at the bottom. So the east side is on the right and the west side is on the left. Amaro distance on a map. So scale is used for showing the actual distance on the ground is reduced manner on a map। देन आसला सिंबल आम कौन कौन सब सिंबल यूज करूँ ना मैप मेकर्स प्रिपेयर सिंबल एप्रोप्रिएट टू देयर नीड। कॉमन सिंबल्स आर आल्सो यूज। तो बहुत सारा कॉमन सिंबल आमर थाए। देन आसला कॉन्सेप्ट ऑफ द अर्थ। ग्लोब इज द रेप्लिका ऑफ द अर्थ। तो आम गोटे ग्लोब को गोटे अर्थ सहित कंपेयर करूँ से ही आम कौटा हूँ स्थल भाग कि कौटा जल भाग कौटा पथुरिया भूमि कौटा मालभूमि कौटा पार्वत्य भूमि ये सब लोकेट करूँ सिंबल मध्यम। आसला मैप मेकिंग कौन टू डेभलप मैप मेकिंग स्किल इन स्टूडेंट्स टीचर मे गिव फॉलोइंग एक्टिविटीज। फर्स्ट द फिलिंग ऑफ आउटलाइन मैप्स। प्रथम गोटे मैप बनवा पूर्व तार आउटलाइन बनवा को पड़े आउ कौन ड्राइंग स्केच मैप देन ताको स्केच करिया को पड़े। देन ट्रैकिंग मैप फ्रॉम टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स शुड कीप इन माइंड फॉलोइंग एस्पेक्ट while drawing map। A scale, so boundaries आउ कौन
डिरेक्शन आ गोटे कौन यूज प्रॉपर सिंबल थिला हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैट एक्सप्लेन विथ एग्जांपल तो आमे जो हमरो विभिन्न प्रकार चैट अछि जहा कि आमे ऑडियो विजुअल मटेरियल हिसाब रे टीचिंग बेले यूज करि थाउ से विषय रे पढिबा द टर्म्स chat is the most inclusive of all terms which have been applied as designation for audio visual materials. Chat is a visual symbol which is used to explain a subject matter or for summarizing or classifying etc. तो आमे गोटे यूनिट को ओवरऑल पिला मानन को बुझिया पई ए मटेरियल्स गुडा यूज करि थाउ देन आसिला टाइप्स ऑफ चैट आमर केते टाइप रो चैट अछि बहुत प्रकार जेमिति कि आमर क्रोनोलॉजिकल हैला पिक्चरियल हैला ए टाइप रो आमर बहुत टाइप रो चैट अछि तो फर्स्ट आसिला आमर क्रोनोलॉजिकल चैट आर यूज्ड टू शो कल्चरल पॉलिटिकल रिलीजियस डेवलपमेंट in a sequential order in teaching history timelines are classified as pictorial timeline that explain event through pictures तो pictorial timeline जोटा रहिला जोटा कि कोन ना जहाँ भी तार थियोरी थाए से गुडी को सब पिक्चर माध्यम रे ही एक्सप्लेन करा जाए देन से कहला प्रोग्रेसिव टाइमलाइन एक्सप्लेन इवेंट फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट दिस चार्ट आर यूजफुल इन डेवलपिंग टाइम एंड प्लेस सेंस देन से टेबुलर चार्ट कोन टू और मोर सेट ऑफ डाटा आर प्रेजेंटेड column wise to explain the facts precisely and make comparison then asila diagrammatic chart kono in this chart information is presented in the form of diagram तो diagram माध्यम रे बुझा जाई थाए a diagram is a simplified drawing designed to show interrelationship then asila pictorial chart in this chart ideas or fact or event are presented through picture they are very attractive and create interest in learning तो पिक्चर माध्यम जदि आम पिला पढ़ाऊँ तो तांकर गोटे से एट्राक्ट हे सहित तांकर गोटे इनर गोटे इंटरेस्ट क्रिएट हम पढ़ा पाई आपणकर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स तो आमर केते प्रकार ग्राफ्स अच्छी ग्राफ इज ऑल्सो ए विजुअल डिवाइस which is used for presenting quantitative data by means of line or bars or सर्कल्स और पिक्चर तो आमर जी कि क्वांटिटेटिव डाटा है से सब को आम इजिली रिप्रेजेंट करिया को बा बहुत गुड़ा क्वांटिटेटिव डाटा देथिबो ताको गोटे स्मॉल डायग्राम करिकी बनेया पई आमे कोन करू ना ग्राफ यूज करिताउ तो ग्राफ मध्य आमर बहुत टाइप रो अछि जेमति कि बार ग्राफ हैला लाइन ग्राफ हैला पिक्चर ग्राफ हैला तो फर्स्ट हमें पढ़िया बार ग्राफ कौन इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल रेक्टेंगल्स फॉर द पर्पज ऑफ शोइंग कंपैरेटिव डाटा they can be arranged horizontally or vertically तो बेसिकली एटा horizontally arrange होता है नहले vertically तो बेसिकली ए टाइप रो arrange होता है ठीक देखि देबे डायग्राम टा देन असला पाई ग्राफ रे कोन होता है परसेंटेज अनुसार माने गोटे सर्कल ले परसेंटेज गुडा को मेंशन है कि थाए पाई ग्राफ illustrate the relative percentage of the part of any given all a circle divided into 3 parts corresponding to the various percentage then asila line graph a line graph consists of line connecting a series of points it is simple way to illustrate accurate data in different period of time then asila pictorial graph kon na pictorial graph can easily be made by securing or making pictures of the same size assigning a unit value to them and mounting them so in this type of graph with the help of some suitable picture and symbols are taken for the visual representation and comparative study of the numerical data तो pictorial graph रे कौन हुए picture में है कि mention है कि थाए then asila amoro next question explain the importance of object and specimens in teaching social studies तो या माने कौन ना सोशल स्टडीज पढ़ेला बेले आमे जो सब मटेरियल्स यूज करछु बा ऑब्जेक्ट यूज करछु पढ़िया पाई जो सब स्पेसिमेंस यूज करछु तार आवश्यकता कौन और तार इंपोर्टेंस टा कौन आमे से सब विषय पढ़िबा they are actual things which are collected from a natural setting of object which can be used in teaching social studies are tools and equipment
टॉयज यूटेंसिल इटीसी। तो सपोज आम गोटे बहुत ही पुराना काल जमी पितल है कि कंसा बासन है ये सब पिलाମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖେଇକି पढ़ेबा ये सब यूटेंसिल तो पिला माने कौन है ना रियल लाइफ सहित रिलेट करें ता सहित जो सब स्पेसिमेन भी आम यूज करवा पिला माने कौन प्रैक्टिकली जिनसटा को जानी पारिबे एनालाइज करि पारिबे तो सेथिपई तांको पढ़िबाटा आउरी इंटरेस्टिंग हे पारिबो। तो स्पेसिमेन कौन ना स्पेसिमेन्स आर सैंपल ऑफ रियल थिंग्स एग्जांपल कौन सैंपल्स ऑफ लिक्विड देन ऑब्जेक्ट बा स्पेसिमेन हेल्प इन डेवलपिंग ऑब्जर्वेशन रे हेल्प करे एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्किल मध्य डेवलप करे। आउ कौन करे ना ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिमेन प्रोवाइड डायरेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस टू द लर्नर्स एंड मेक द लर्निंग रियल। आउ कौन ना शिक्षा पद्धति को आहुरी रियल बनाए। ए यूनिट लास्ट क्वेश्चन बहुत ही छोट क्वेश्चन टा एते भी इम्पोर्टेंट नुह आपण बस टिके थोरली रीडिंग मारिकिना पळेबे। राइट अबाउट सोशल स्टडीज स्क्रैपबुक्स। तो सोशल स्टडीज स्क्रैपबुक माने कौन ना एमती गोटे बही जोटा कि पिला मानको मनरे इंटरेस्ट क्रिएट करिया पई रखा जाई थाए जो थरे कि पिला माने जहाँ भी सब हिस्टोरिकल प्लेस देखिचंती किंबा कोडी कोडी सब बुलिया को जाइचंती तो सेई थिरे से माने कौन करिवे ना से पिक्चर देखिबे से जगार ना लिखिबे ता सहित कौन कौन एक्सपीरियंस माने करचंती से सब विषय ही लिखिबे। It is an activity in social studies which is interesting for children. The children will collect different pictures and paste them in a book. तो पिला माने कौन करिवे सब विभिन्न प्लेस रो फोटोग्राफ सब कलेक्ट करके से माने बुक टारे रखिबे बा लगेबे। दे राइट फ्यू लाइन्स अबाउट द पिक्चर। सपोज गोटे इंडिया गेट रो गोटे पिक्चर कलेक्ट करथिबे देन इंडिया गेट विषय किछि लिखिबे ताजमहल विषय किछि लिखिबे तो सही भलिया। हिस्ट्री कौन हिस्ट्री स्क्रैपबुक कौन ना इट इज इम्पोर्टेंट मोमेंट इन फैमिलीज हिस्ट्री विजिट एंड फेमस हिस्टोरिकल इवेंट। जियोग्राफी कौन करिवे ना स्क्रैप द वेदर वेयर वी लिव। तो जियोग्राफी से कौन करिवे ना तांको अंचल जेमती पाणीपाग बा जलवायु केमती से विषय ही लिखिबे। सो एतिकी थिला ओवरऑल आपण मानकर यूनिट 4 रो इम्पोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन होप कि आपण मानकु भल लागिथिबो। जदि आपनको वीडियोटी भल लागिछि देन वीडियोटी को लाइक करिवे आपण मानकर फ्रेंड मानक सहित शेयर कर देबे आ चैनल टी को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दियंतु। नेक्स्ट क्लास रे हमें सोशल स्टडीज रो यूनिट नंबर 5 मध्ये कवर कर देबु। सेति पर्यंत रहिली जय जगन्नाथ।